Assalam alaikum. Hi guys. Today I'm going to review forensic medicine books for MBBS. The first book I'm going to talk about is Textbook of Forensic Medicine and Toxicology by Christian Vij. This was our standard textbook in our college and it is in most colleges in Pakistan. So students commonly refer to it as simply Vij. It's a really good book. आप ये बुक सिर्फ ये बुक ले लें तो ये काफ़ी है, आपकी फोरेंसिक मेडिसिन सारी कवर हो जाती है। सारा एग्ज़ाम का जो भी क्वेश्चंस होते हैं सब इस बुक में शामिल है। बहुत अच्छी बुक है। तस्वीरें कोई इतनी अच्छी नहीं है बट द कंटेंट इज़ रियली नाइस। आई रिकमेंड दैट यू बाय दिस बुक। The next book is Parikh's Textbook of Medical Jurisprudence, Forensic Medicine and Toxicology. ठीक है, ये भी अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास कृष्ण वेज वाली बुक है तो इसको लेना ज़रूरी नहीं है। इट काइंड ऑफ दे विल ओवरलैप। इन दोनों में से आई फील सुपीरियर बुक जो है वो कृष्ण वेज वाली है। The third book is Principles and Practice of Forensic Medicine by नसीब आर अवान। ये भी अच्छी है। पतली सी बुक है। मैंने इसको रखा था एज अ साइड बुक विद कृष्ण विज सिंपली बिकॉज दिस इज़ लिटिल बिट स्पेसिफिक टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। कुछ इसमें टॉपिक्स हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, इसमें पिक्चर्स भी कुछ डिफरेंट सी हैं, तो इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन विद विज। देन देयर्स सिम्पसन्स फोरेंसिक मेडिसिन। ये मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट ली थी। इट वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस बट इट्स अ गुड बुक। छोटी सी है, पतली सी बुक है। सॉर्ट ऑफ एन एपेटाइजर बुक मैं जो कहती हूँ कि वो बुक है जो कि आपके इंटरेस्ट बिल्डिंग के लिए सर्व करता है पर्पस ना। तो मेन टेक्स्ट बुक शुरू करने से पहले जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग योर क्यूरियोसिटी गोइंग, दिस इज़ दैट काइंड ऑफ बुक। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एसेंशियल दैट यू बाय, बट अगर आप शौकीन है, आपका इंटरेस्ट है तो ले लें, अच्छी बुक है। इसमें पिक्चर्स भी अच्छी हैं। ऑब्वियसली इस सिंस ये इतनी पतली बुक है इसमें हर चीज़ तो नहीं है। Like I said, it's just a little teeny tiny book for your interest. Okay, the next book is Concise Forensic Medicine and Toxicology by Parikh and Keith Simpson. This is an average kind of a book. जिस तरह वो नहीं होती एफएससी में, मैट्रिक में जो कीज मिलती हैं आपकी जिसमें प्री सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये उस टाइप के फॉर्मेट की किताब है। मुझे नहीं पसंद आई ऑनेस्टली, ना पढ़ने का दिल करता था। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आई एम श्योर देयर आर पीपल हु लाइक दिस बुक, लेकिन इफ़ यू हैव विज, that's the main book. You don't need additional books for forensic medicine, right? So I suggest that it's not essential that you buy this book. The next one is Textbook of Forensic Medicine and Toxicology by Nagesh Kumar G. Rao. I freaking loved this book. Again, this was not part of the syllabus. I bought it because of my interest. आई लव दिस बुक। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसकी पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इसकी तस्वीरें बहुत ग्राफिक और बहुत अच्छी थी। इसकी तस्वीरें देख के ही मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता था। और इसमें रियल पिक्चर्स हैं। वो जो कृष्ण वेज वाली बुक है ना, उसमें ज़्यादातर ड्राइंग्स हैं। इसके अंदर एक्चुअल शॉट्स हैं, एक्चुअल पिक्चर्स हैं। और आई थिंक दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, और उसकी प्रिपरेशन के लिए भी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी और इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए भी। तो आई पर्सनली थिंक कि इट सर्व्स काइंड ऑफ लाइक एन एटलस ऑलमोस्ट। तो मेरा मशवरा लें तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर लें। It's very helpful when you're preparing for the OSCE. Then this is another essential book that you have to have क्योंकि it's one of a kind. ऐसी और कोई book मुझे नहीं पता। Parikh's Textbook of Medical Jurisprudence, Forensic Medicine and Toxicology. तो आप कह सकते हैं एक तरह से law की किताब है, which is relevant to medical, So it's a must-buy book for medical law. ये अंदर से ऑब्वियसली डल एंड बोरिंग काइंड ऑफ बुक है। इसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, इसको ख़ास इसमें इलस्ट्रेशंस नहीं है, पर इसका मकसद भी नहीं है इलस्ट्रेट करने का। इट जस्ट हैज़ टू स्टेट रेलिवेंट लॉज, राइट? तो इट्स गुड, ये लेनी चाहिए आपको। फाइनली हर कॉलेज में फोरेंसिक लैब, म्यूज़ियम भी इसको कहते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आपके पास पिक्चर्स नज़र आएंगी और आपके पास सैम्पल्स होंगे। डू पे अटेंशन।
और ऑटोप्सी करने का आपको मौका मिलता है या एटलीस्ट कोई डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हो तो ध्यान से देखें एंड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द डेड, यू नो। आई पर्सनली फील कि कुछ स्टूडेंट बहुत इंसेंसिटिव हो जाते हैं व्हेन दे आर एग्जामिनिंग अ डेड बॉडी, दे आर अ बिट केयरलेस। मैंने जो पर्सनली फील किया और मुझे ये बात बहुत हर्ट करती थी कि उस डेड बॉडी को भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए जैसे एक अलाइव पेशेंट को हम करते हैं। So yeah, this is priceless learning experience. Do learn from it and do appreciate that you are privileged enough to learn from these modalities, right? So that was it for forensic medicine books. I hope you liked my video. If you liked it, please like, comment, share, subscribe, and follow me on my social media. And I will be back with another video. Bye.